है ना बेटा। तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान। और अगेन एक रिक्वेस्ट और है, हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करने आए हुए हैं बेटा, हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, ना आपका ना हमारा। इट्स ओनली कि हमने पढ़ाना है और आपने पढ़ना है। इसलिए कोई भी मैसेज इधर उधर का रिगार्डिंग एनीथिंग एल्स, अपने सब, आदित्य बेटा अपना वीडियो ऑफ करो, ताकि कोई भी, आप भी और हम भी, कोई भी डिस्ट्रैक्ट ना हो आपके वीडियो से। ठीक है। तो व्हाट आई हैड, कल मैंने जो है सुना, मेरी एक चाइना में फ्रेंड रहती है, तो शी इज ऑल्सो ए टीचर इन हाई स्कूल। तो वो मुझे बता रही थी कि चाइना में तो जब हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा उनके गाइडलाइंस है कि बच्चे उस रूम में बैठे जहां पे कोई डिस्टरबेंस ना हो, ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड, ये वो बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। अभी हमारा क्योंकि कंट्री कम्युनिस्ट नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लिबर्टी बहुत है, बट हम उस लिबर्टी का बहुत ज्यादा फायदा ना उठा के ट्राई करें कि हम अपने काम से काम, सिर्फ पढ़ाई की बात जो है वो करें। वो तुम करते हो। ठीक है बेटा, चलिए जी। So let's start with कि हम कल we were doing about male reproductive system, और male reproductive system में बेटा हमने जो है yesterday we were doing about urethra, male urethra। मेल यूरेथ्रा में ये याद रखना बेटा, ये यूरिनरी ब्लैडर है, और ये नीचे क्या है, दिस इज यूरेथ्रा। यहाँ पे बेटा एक स्फिंक्टर है, दिस इज फॉर्म्ड ऑफ स्मूथ मसल्स। दिस इज यूरेथ्रा, this is prostate gland, then membranous urethra, और ये penile urethra, So there are two sphincters. There is one at the start of the urethra, and there is another one which is present at the end of membranous urethra. ये हमारे पास जो है दो sphincters है। Sphincters क्या होते हैं? These are like a doors, है ना, दरवाजे है ये दरवाजा खुलेगा तो यूरिन इसमें से पास करेगा, यहाँ आके फिर ये दरवाजा खुलेगा, देन यूरिन कम आउट टू द पेनिस और यूरेथ्रल मीटस अल्टीमेटली। दिस इज कॉल्ड एज internal sphincter. This is called as internal sphincter. It is formed of smooth muscles and it is involuntary. It is involuntary. It opens, ये आपने +1 में भी किया होगा, it opens when urinary bladder gets slightly more than half filled. ठीक है जी। तो ये जो है, तो दिस इज इंटरनल स्फिंक्टर। ठीक है। और ये जो है नीचे वाला जो है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। दिस इज एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इट इज फॉर्म्ड ऑफ striated muscles. It is formed of striated muscles and it is voluntary. A person can control the opening of this muscle. So this is voluntary, and
due to which person can control the process of micturition for some time. Person can control the process of micturition for some time. कुछ टाइम तक micturition जो है वो control की जा सकती, but not for a very long time. So this is about urethral sphincters. This is internal sphincter, smooth muscles. External sphincters, it is formed of striated muscles. लिख लो फटाफट से. बेटा पवनीत एमआरसीटी से बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हो रही है, फिर मुश्किल हो जाएगी बेटा मुझे दोबारा दोबारा से ज्वाइन करवाने के लिए. So try not to leave the meeting. ठीक है जी, डन. करें आगे. यस मैम. चलिए जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट हमने करना था, कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था, पेनिस. एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन मेल having penile urethra. This is penile urethra. बेटा let us say, अगर मैं आपको थोड़ा सा चलिए ये देखिए, ये यूरेथ्रा है, ये बीच में जो है इट इज यूरेथ्रा. ठीक है, और इसके बाहर 3, दिस इज in the center there is urethra and penile urethra, and outside penile urethra there are 3 columns. 2 कॉलम आपको नजर आ रहे हैं और एक ये कॉलम है. 3 columns of vascular tissues. और इन वेस्कुलर, ये वेस्कुलर 3 कॉलम्स है, 3 सिलेंडर्स है, और इन सबको कवर किया हुआ है फाइब्रस टिश्यू ने, और उसके बाहर आ जाती है स्किन. डू यू गेट मी? ठीक है. Penis has penile urethra and it is surrounded by 3 bundles of vascular tissue. ठीक है, and these 3 bundles of vascular tissue, they are further surrounded by the fibrous tissue which is further covered by the skin. This is the structure of penis. ठीक है, तो write down penile urethra. It is surrounded by 3 columns of vascular connective tissue. 3 columns में दो जो है corpora cavernosa and 1 corpora spongiosa. Two columns of corpora, ये नाम ही है बेटा, कोई ऐसा फर्क तो नहीं है, slight differences है, but these are the 2 names. ठीक है, and these are dorsal in position, and 1 column of corpora spongiosum.
on ventral side. ठीक है, ये नाम जिसने कंपटीशन देने हैं वो याद रखें, बाकी ये तो सभी को याद रखने की जरूरत है। ठीक है जी। तो सराउंडेड बाय एंड which is further covered by layer of fibrous tissue followed by skin. ठीक है जी। The tip of the penis is called as glass penis. Two columns of corpora cavernosa, cavernosa. ठीक है। Tip of penis is, इसका नाम है glass penis। और जो बेटा ग्लास पेनिस है इसके ऊपर स्किन का लूज फोल्ड होता है। ग्लास पेनिस कवर्ड बाय loose fold of skin called as foreskin. And urethral opening is called as urethral meatus. Urethral opening is called as urethral meatus. So this is one column of corpora spongiosum. ठीक है, ये लिख लो फटाफट से। covered by layer of fibrous tissue followed by skin. Fibrous tissue followed by skin. ठीक है बेटा, डन करें आगे। चलो कर लो फटाफट। ठीक है बेटा, चले आगे। Then accessory glands of male reproductive system. Next is accessory glands. Ma'am. हाँ जी बेटा। Ma'am, board is not clear. May I rejoin?
हाँ हाँ, अपने नाम के साथ बेटा रिज्वाइन कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? रवनीत। पवनीत? नो मैम, रवनीत। रवनीत डीपीएस फरीदकोट। ठीक है बेटा, करो ज्वाइन करो, मैं करती हूँ। accessory reproductive glands in males, ठीक है, कौन कौन सी है? Prostate, हाँ, इट इज। Cooper's and बेटा एक मिनट, हाँ एक मिनट, मैं जरा इनको ठीक है, अपने वीडियो ऑफ करो बेटा, वीडियो ऑफ करो। तो सबसे पहले आ जाती है बेटा, फर्स्ट आ जाती है सेमिनल वेसिकल, वन पेयर, ठीक है। थोड़ा सा याद करो कि भाई हमने ये यूरिनरी ब्लैडर है, आपको पता है, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। यहां से बेटा यहां से एक वास डिफरेंस आया, और यहां से भी एक वास डिफरेंस आया, ठीक है। देयर आर टू वास डिफरेंस एंड देयर आर टू seminal vesicles. So seminal vesicles are one pair. मेन रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, secrete 60% of seminal plasma. जो फ्लूइड पार्ट है सीमन का, इट इज कॉल्ड एज सेमिनल प्लाज्मा। इसको करो फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमन, it is called as seminal plasma. It is secreted by seminal vesicles. Its pH is 7.3. 0.4 to 7.6 तक alkaline pH है, ठीक है। It secretes alkaline mucus, जो फ्लूइड है, it secretes alkaline mucus. It also secretes sugar fructose. Then it also secretes hormone prostaglandins, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स जो है, दे सिक्रीट alkaline mucus, then they secrete the sugar fructose hormone prostaglandins, and they also secrete clotting proteins. और ये लिखना है ब्रैकेट में, डिफरेंट फ्रॉम दे सिक्रीट, pH है इतना, सिक्रीट alkaline mucus, MUCOUS mucus, sugar fructose hormone prostaglandins and clotting proteins, ठीक है। clotting proteins different from, ये जो clotting proteins है different from blood clotting proteins. इनका फंक्शन हम कर लें, क्या फंक्शन है बेटा, लिखते चलो साथ साथ। alkaline mucus, it provides
मैम जस्ट अ मिनट प्लीज। हाँ हाँ, कर लो कोई बात नहीं। Ma'am, that's clotting. Last line. Different from blood clotting proteins. जो ये बेटा एल्कलाइन म्यूकस है, ये एल्कलाइन क्यों है? इट प्रोवाइड्स एल्कलिनिटी, मैंने स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिख दी है, एल्कलिनिटी, एल्कलिनिटी टू सीमन। क्यों सीमन क्यों एल्कलाइन होना चाहिए? विच न्यूट्रलाइजेस यूरेथ्रा ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। Because sperm gets inactive in acidic medium, because sperm gets inactive in acidic medium. sperms को एक्टिवेशन के लिए, सर्वाइवल के लिए एल्कलाइन मीडियम चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद शुगर फ्रक्टोज। Sugar fructose gives energy. It gives energy to sperms as it acts as respiratory substrate. As it acts as respiratory substrate. ठीक है जी। Respiratory. Substrate, respiration में as substrate it is used. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन। इट हेल्प्स इन अगर बेटा +1 का याद हो, थोड़ा सा मैं +1 का भी आपको बताई जा रही है कि प्रोस्टाग्लैंडिन डिराइव्ड फ्रॉम fatty acid, arachidonic acid. It is derived from कौन सा fatty acid? Arachidonic acid. ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा कि और क्या फंक्शन क्या है इसका? इट कॉजेस कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जब सीमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा, देन prostaglandins causes contractions of female reproductive tract and thus helps in movement of sperms. Thus helps in movement of sperm. उसके बाद क्लॉटिंग प्रोटीन्स। क्लॉटिंग प्रोटीन्स का क्या फंक्शन है बेटा? इट कॉजेज क्लॉटिंग
of semen after ejaculation. ये बेटा एकदम इकट्ठा हो जाता है, एकदम ये जेली लाइक बन जाता है आफ्टर इजैक्यूलेशन. So it is due to clotting proteins secreted by seminal vesicles. So this is about seminal vesicles. इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके +2 में एज वेल एज पीएमटी में आ सकते हैं, whatever you want. ठीक है जी. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा सेकंड है prostate gland. It is one largest gland of male reproductive system. It secretes citric acid, which nourishes sperms. It secretes citric acid, which nourishes sperm. It also secretes, और क्या है? Also secrete कई enzymes and prostaglandins. अब कौन से enzymes ही अभी हमें जरूरत नहीं है. It secretes various enzymes and prostaglandins. Secretions का pH 6.5 to 6.7. Slightly acidic. Prostate gland secretions जो है वो क्या है? Slightly acidic है. ठीक है जी. And it forms 25% of the semen. It forms जैसे वो seminal vesicles जो थे, that is 60%. It forms 25% of semen या seminal plasma एक ही बार है. It forms 25% of the semen or seminal plasma. नेक्स्ट हम आ जाते हैं सीमन और सेमिनल प्लाज्मा एक ही बात है. ठीक है जी. थर्ड आ जाता है बेटा कूपर्स और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. वन पेयर small P-shaped. This is one pair. ये देखो ये है Cooper's gland. So one pair P-shaped small sized, present on both sides of membranous urethra, present on
both sides of membranous urethra and they secrete alkaline fluid. बहुत ज्यादा हम important तो नहीं कह सकते, but they secrete alkaline fluid. Function का क्या है? Neutralizes semen and lubricates penile urethra. Neutralizes, जो भी एसिडिटी है उसको खत्म कर रहा है. Neutralizes semen and lubricates penile urethra. So these are Secrete alkaline. alkaline, मैंने थोड़ा सा फ्रूट नहीं, fluid. Secrete alkaline fluid. ठीक है. The secretions of all these accessory male reproductive glands is called as seminal plasma. Is called as seminal plasma. और इसमें क्या कुछ है? Alkaline mucus, sugar fructose, calcium ions, citric acid, prostaglandins, and various enzymes. एक और भी है clotting factors. And various enzymes. This is seminal plasma. Sperms plus seminal plasma is called as semen. The sperms with seminal plasma is called as semen. एक टाइम में सिंगल इजैक्यूलेशन, एक टाइम में कितना सीमन निकलता है? सिंगल इजैक्यूलेशन हैज 3 ml semen having 200 to 300 million sperms. इतने स्पर्म्स होते हैं 3 ml सीमन में. बाकी चीजें तो सेमिनल प्लाज्मा की ये है ही है, along with 200 to 300 million sperms. Ma'am, their lifespan, sperm's lifespan. कहाँ पे बेटा?
स्पर्म्स की लाइफ स्पेन कितनी होती होगी? स्पर्म्स की लाइफ स्पैन कितनी है? दैट इज अबाउट 24 to 48 आवर्स, 2 दिन तक जिंदा रहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. इट इज अबाउट, इफ, अब यहाँ पे एक और चीज है, इफ semen is not ejaculated, then sperms are, sperms get degenerated and absorbed in vast difference. क्योंकि स्पर्म्स तो बनते रहते हैं, अगर इजैक्यूलेशन नहीं हुई then they get degenerated and are absorbed in vast difference. Lifespan of sperms in female reproductive system, is about 48 hours, 2 days. Lifespan of sperms in female reproductive system is about 48 hours. pH of the sperm, pH of semen, it is about 7.35 to 7.5. Ma'am, what is there in second last line? Then semen gets. Then sperm, if semen is not ejaculated, then sperms get degenerated. मर जाते हैं, killed लिख लो. Sperm gets killed and are absorbed in vast difference. ठीक है, pH of semen 7.35 to 7.5. ठीक है, इसमें से जितना भी सीमन है फॉर फर्टिलाइजेशन, %60 of sperms should be active, तकरीबन 60% स्पर्म्स एक्टिव और जिंदा होने चाहिए. एंड आउट ऑफ दीज, इनमें से भी 40% शुड बी हाईली मोटाइल. ये नहीं कि कोई पीछे से धक्का लगाएगा तो हम जाएंगे. दे शुड बी हाईली मोटाइल. ठीक है जी. So this is about semen. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है जी. अब क्या है, प्यूबर्टी इन मेल्स. एट द एज ऑफ 12 to 14 years. टेंथ में ये चीजें आप कर चुके हो कि प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताऊंगी. इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ hypothalamus
and pituitary. क्या होता है प्यूबर्टी के? Maturation of testes, which start producing sperms, yeah, which starts spermatogenesis. Another is elongation and development of penis. Then there is, हम कह सकते हैं, the voice become hoarse, heavy हो जाती है, shrilled नहीं रहती. Then appearance of facial hair, दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं. मैम रिपीट लास्ट सेकंड पॉइंट. वॉइस बिकम्स होर्स. होर्स मतलब लड़कों की आवाज जब 12 से 14 साल उनकी हैवी हो जाती है, उससे पहले लड़कियों जैसी पतली आवाज होती है. ठीक है, और ये क्यों है? दैट इज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एडम्स एप्पल. डेवलपमेंट ऑफ एडम्स एप्पल है. दैट इज देखेंगे कोई नहीं. ठीक है, एक्सक्यूज मी. ठीक है बेटा, तो अब हम आ जाते हैं कि कैसे ये कंट्रोल करते हैं. From puberty onwards. प्यूबर्टी के बाद क्या कुछ हो रहा है? हाइपोथैलेमस सिक्रीट्स. ध्यान से, इसके बारे में बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा +2 में भी. हाइपोथैलेमस सिक्रीट्स गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीजर हार्मोन. लिख लो पहले, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीजर हार्मोन्स. गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स रिलीजर हार्मोन्स. ठीक है, कौन कौन से है बेटा? FSH, RH and ICSH-RH. Follicle stimulating hormone, releaser hormone. लिख लो, FSH-RH है. Follicle stimulating hormone, releaser hormone. और फिर है इंटरस्टिशियल सेल. इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरस्टिशियल सेल. Repeat previous follicle stimulating hormone and मैं बता रही हूँ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजर हार्मोन. और दूसरा है रिलीजर के, yes ma'am, RELEASER, रिलीजर, जो रिलीज करवाते हैं, रिलीजर हार्मोन. ठीक है, और फिर है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजर हार्मोन. Interstitial cell stimulating hormone, releaser hormone.
इनका क्या फंक्शन है बेटा? कि ये किस पे एक्ट करते हैं बच्चे? दे एक्ट ऑन anterior lobe of pituitary. They act on anterior lobe of pituitary gland. सब हमारे फोरब्रेन में है। और फिर क्या है? anterior lobe of pituitary secretes gonadotrophic hormones. GNTH means gonadotrophic hormones. कौन से दो गोनेडोट्रोफिक हॉर्मोन्स है? FSH एंड ICSH. ICSH इज सेम एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. बिल्कुल ठीक है बेटा, LH की तरह से ही है. यहाँ पे एक स्टार डाल के लिख लो. ICSH is same as LH of female. LH की फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बिल्कुल ठीक है, सेम ही है. बट क्योंकि ये इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करती है, इसलिए हमने इनका नाम ICSH रख दिया. FSH का क्या फंक्शन है बेटा? दे रेगुलेट Sertoli cells to secrete ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. ये मैंने आपको कल भी बताया था. They regulate Sertoli cells to secrete ABP. दूसरा फंक्शन है they causes. Please repeat. They regulate Sertoli cells to secrete. बेटा अपना माइक साथ ही म्यूट किया करें. They regulate Sertoli cells to secrete ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. आपने कल किया होगा. ठीक है जी. दूसरा आ जाता है another is FSH का और क्या है? FSH also causes maturation of sperms along with testosterone. FSH causes maturation of sperms along with testosterone. उसके बाद है ICSH. ICSH में बेटा पहली बात तो एक्सॉन इंटरस्टिशियल या लीडिक सेल्स. एक्सॉन इंटरस्टिशियल और लीडिक सेल्स which secrete androgen or
टेस्टोस्टेरोन, एक ही बात है, विच सिक्रीट एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन। और जो ये टेस्टोस्टेरोन है, इसका क्या है, कॉजेस स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी हम करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, बट क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, causes spermatogenesis. Second है causes maturation of sperms, causes maturation of sperms. और तीसरा है बेटा development of secondary sexual characters. जैसे मैंने बताया facial hair, hoarse voice, these are secondary sexual characters. These are all caused due to androgen या testosterone. मैम ये टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस है तीनों। बिल्कुल, ये जो बेटा ये 3 फंक्शंस है, ये टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस है। ठीक है जी, इज इट ओके? Yes, ma'am. करें हम आगे? एवरीबॉडी डन? यस मैम। चलिए, Yes, ma'am. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा बेटा माइक म्यूट करो अपना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, तो आपको कल हमने जो है वो किया था, दैट इज इन द testicular lobule, in the seminiferous tubule there is a lining of germinal epithelium जहां पे germ cells है। ठीक है, तो सबसे पहले आ गए germ cells, और जो ये germ cells है, cells of germinal epithelium, 2n is equal to 46. These germ cells, they divide by mitosis to form many, ये बहुत सारे जो है, these are called as spermatogonia. These divide by mitosis to form many spermatogonia. These are also 2n is equal to 46. Then enlargement of spermatogonia. ग्रोथ फेज हो रहा है बेटा, enlargement of spermatogonia. तो हम यहाँ कह सकते हैं, लेट अस से हम एक की बात कर रहे हैं, ये सेल बड़ा हो गया, this is 2n and this is called as
primary spermatocyte. This is also 2n is equal to 46. This is primary spermatocyte. ठीक है, और ये primary spermatocyte then undergoes meiosis 1. This is, it undergoes meiosis 1 and results in formation of these are called as haploid आ गए हैं, N आ गया है, secondary spermatocytes. N is equal to 23. ठीक है, these secondary spermatocytes then undergo meiosis 2 and results in formation of four spermatids. एक spermatogonia, 4 spermatids. Then these 4 spermatids undergoes spermiogenesis or maturation to form फोर स्पर्मेटोजोआ. मैं अभी इनका डायग्राम आपको बताऊंगी डिटेल में, बट दीज आर 4 spermatozoa. Each is n. N is equal to 23. हर एक में n है और n क्या है 23. इसमें से 2 जो है लेटर से, अभी थोड़ा सा मैं और थोड़ी डिटेलिंग में कर जाऊंगी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो 2n is equal to 44xy. ठीक है, तो यहाँ पे आपने सेल डिवीजन की हुई है, आपको पता है भी किस तरह से होता है. तो 22x 22x 22y and 22y. 2 type of sperms are formed. ठीक है जी. So this is spermatogenesis. बनाओ फटाफट से. इसको बेटा मैच्योरेशन या एक और टर्म कह देते हैं स्पर्माटिलियोसिस. एक ही बात है, स्पर्मियोजेनेसिस. प्रभजोत बेटा याद करो मियोसिस का, जब क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाएंगे 44xy, तो इसके साथ जब अगर मियोसिस होगी तो क्या हो जाएगा 22 क्रोमोसोम, साथ में एक सेक्स क्रोमोसोम, 22 क्रोमोसोम, एक में वाई क्रोमोसोम. ठीक है प्रभजोत, इज इट क्लियर?
चलिए जी, एवरीबडी डन? क्या हम आगे चले, इसकी प्रोसेस लिख लें? Yes, ma'am. तो यहाँ पे लिखो spermatogenesis has 3 phases. Spermatogenesis has 3 phases. Multiplicative phase, ग्रोथ फेज, और तीसरा है मैच्योरेशन फेज. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है, दिस इज जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया बन रहा है. दिस इज मल्टीप्लिकेटिव फेज. ये जो है, दिस इज ग्रोथ फेज. और ये सारी मैच्योरेशन फेज में meiosis 1 and meiosis 2. These occurs in maturation phase. So there are बेटे रिया ने मेरे से पूछा है कि why these are 44XY. आपको पता है बेटा, अभी जेनेटिक्स में करेंगे. हमारे पास किसी भी सेल में, लेट अस से मेल्स के पास हम बात करते हैं, लड़कों के पास हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स है. उन 46 क्रोमोसोम्स में जो 44 है वो तो ऑटोसोम्स है, और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स है, एक्स एंड वाई. इज इट राइट? तो 44 क्या, 22 पेयर्स. ठीक है, और पेयर्स अलग अलग हो जाते हैं मेयोसिस में. इज इट राइट? 44 ऑटोसोम्स एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम्स, एक्स एंड वाई. इज इट ओके रिया? Yes, ma'am. ठीक है जी. तो मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज. आपको मल्टीप्लिकेटिव और ग्रोथ फेज पता है, मैच्योरेशन फेज में लिख लो. मैच्योरेशन फेज इंक्लूड्स meiosis 1 and meiosis 2. Maturation phase includes या involves meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 is also called as, Hanisha beta एक मिनट. Maturation phase includes meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 is called as maturation phase 1 या maturation division 1. Meiosis 1 is called as first maturation division, and meiosis 2 is called as second maturation division. Meiosis 2 is called as second maturation division. Meiosis 2. Is called as second maturation division. Full stop करके maturation phase results in formation of 4 spermatids. Maturation division results in formation of 4 haploid spermatids. The spermatids,
बेटा प्रभजोत पूछ रही, अभी आप छोड़ दो, अभी आप इस पे छोड़ दो, अभी रहने दो, इस पे नहीं, अभी हम जाएंगे जेनेटिक्स में जाएंगे, छोड़ दो, अभी हम रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करें, आप इसमें कंफ्यूज मत हो, ठीक है जी। रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द स्पर्मेटिड्स, ये जो स्पर्मेटिड्स है, द स्पर्मेटिड्स absorbs nutrition from Sertoli cells, Ma'am, हाँ जी, ma'am, repeat this point, please. the spermatids absorb nutrition from Sertoli cells and form spermatozoa. From Sertoli cells, CELLS, Sertoli cells, and form spermatozoa whose heads are, spermatozoa का जो ये head है, whose heads are embedded in the Sertoli cell. दोबारा से बोल रही हूँ, spermatids absorb nutrition from Sertoli cells to form spermatozoa. Full stop करके, the head of spermatozoa are embedded in the Sertoli cells. इससे न्यूट्रिशन लेते लेते मैच्योर हो रहा है. Head of spermatozoa are embedded in Sertoli cells. Release of, next point है, release of spermatozoa from Sertoli cells and seminiferous tubules, उससे निकल के कहाँ चले जाएंगे, एपिडिडिमस में चले जाएंगे, या एपिडिडिमस नहीं, अभी तो बहुत सारे रेटेटेस्टिस और वहां सब जाना है, ठीक है। रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स and seminiferous tubules is called as spermiation. बेटा sperms and spermatozoa सेम है, spermatozoa are mature sperms. बेटा क्वेश्चन आ जाता है, what is the difference between, लिख लो, what is the difference between spermiation and spermiogenesis? What is the difference between spermiation and spermiogenesis? ये आपको पता है, क्वेश्चन लिख लेना, आंसर फिर लिख लेना, जिसको नहीं पता चलेगा मेरे से पूछ लेना. एंड हनीशा, any doubt still left? Ma'am, difference between permeation Permeation and spermiogenesis. Spermiation. Permeation and spermiogenesis. Hanisha, any doubt which is left? I hope it's okay to all. ठीक है बेटा, everybody tomorrow is holiday है ना, संडे है. बहुत दिनों से हम continuously classes बता रहे हैं, आपको भी रिपीट करने के लिए, रिवाइज करने के लिए टाइम चाहिए. तो tomorrow everybody, every class, for every class there is holiday, कोई क्लास नहीं होगी. और जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं लगाई, मतलब कुछ सेशंस मिस कर दिए होंगे,
ठीक है, हम रेगुलर पोस्ट कर रहे हैं ग्रुप्स पर, ठीक है, हम व्हाट्सएप ग्रुप पे रेगुलर पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड इफ एनीबडी इज नॉट इन व्हाट्सएप ग्रुप दे कैन रिक्वेस्ट अस, जो आपका आईडी नंबर है उसी पे ही आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो, हम आपको पुराने लेक्चर्स भेज देंगे, ठीक है। आई विश वी आर डूइंग अवर बेस्ट टू कन्वे द जो भी हम पढ़ा पा रहे हैं आपको पढ़ा। अक्षय बेटा तुम्हारे साथ मैं बाद में बात करती हूँ, तुम्हारा तो टेस्ट है ही है अक्षय का, है ना, आपका तो फिजिक्स का टेस्ट है ही है, इसलिए आपकी हॉलीडे क्या और नहीं, बाकी रेगुलर क्लासेस की छुट्टी है, ठीक है जी। इज इट ओके टू एवरीबडी? एनीथिंग एल्स? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ठीक है मैम। यहाँ पे मैम यू सेड मैम दैट, लास्ट आपने डिफरेंस बिटवीन बोला था ना, परमिएटेशन एंड परमिएशन एंड स्पर्मियोजेनेसिस। ओके। हाँ जी बेटा, sperms gets inactive in the acidic medium, they get killed in the acidic medium। फरीदकोट में कोरोना आ गया है, कोई बात नहीं बेटा, कोरोना ठीक भी हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। एंड सिट्रिक एसिड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, ठीक, ये बेटा ठीक बताया आपने कि सिट्रिक एसिड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, बट उससे पहले क्या आ गया है, उससे पहले जो है उधर से सेमिनल वेसिकल्स का भी तो फ्लूइड आ गया है, सिट्रिक एसिड तो बाद में आया। तो सेमिनल वेसिकल्स ने वो मीडियम जहां पे स्पर्म्स है, ठीक है, उस मीडियम को अल्कलाइन ही रखना है या न्यूट्रलाइज कर देना है, अदरवाइज बहुत से न्यूट्रिशन के लिए तो बहुत सारे एसिडिक सब्सटेंसेस चाहिए ही है। हम अगर अपनी बॉडी में बात करें बेटा, देखो जैसे फॉर एग्जांपल हरमन, एवरीबडी एल्स, हम कहते हैं कि जो लेमन है वो लो, है ना, खट्टे जो फ्रूट्स है वो लो, खाओ, क्यों भाई, क्यों खाएं, जबकि हमारी बॉडी तो अल्कलाइन मीडियम में ज्यादा ठीक रहती है। हम कहते हैं अल्कलाइन फ्लूइड्स, इवन देन वी से कि सिट्रस फ्रूट्स लो, नींबू लो, संतरा लो, मौसमी लो, क्यों, बिकॉज these citrus fruits, when we eat them, when they go into gut, they get neutralized and they promote, और juices उनको neutralize करके उनके benefits हमें देते हैं। इसी तरह से जो seminal vesicles का fluid है वो alkalinity दे देता है और citric acid उसको benefit दे देता है nutrition के लिए, ठीक है। किरण कह रही है बेटा क्या रिपीट करना है बच्चे, कि citric acid जो है वो although it is acidic but it gets neutralized by the secretions of seminal vesicles and thus it provides nourishment to the sperms। is it okay? कोई बात नहीं। it acts as a buffer, बिल्कुल ठीक, बफर तो है ही है बेटा, citric acid बफर नहीं है, मतलब वो तो अल्कलाइन फ्लूइड आया उसने जो है उसको जो है न्यूट्रलाइज करके, बफर तो कुछ भी नहीं है। Class is over. Yes beta, class is over, thank you very much। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay beta, okay, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. thank you beta। Now we will meet